I think the video people want some shots. Okay, thank you very much. Please take the... Check on the AC. Hi guys, long time. Yes, did you all like the trailer? Okay, that's quite a nice and unanimous yes. That makes me happy. So, is somebody taking care of this, or should I just start by myself? Is there a mic with you guys? Mic nahi hai aapke paas? Okay. Priyanka, are you there? Yeah. Okay, so should we start? Yes. Yes? मेरा सवाल है Okay. जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन जी सॉरी, आप ना शक्ल दिखाई दे रही है ना आप दिखाई दे रहे हैं. या जी. जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन. From which magazine? मकराना मैगजीन. Makrana magazine. Yes. इस फिल्म से आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? How do you address me? You've been calling me Rani for so long. I think my name hasn't changed. So you can... Hi Bhavna auntie, how are you? You also here? How nice. Hi. Rani, so sweet. Yeah, so you can call me Rani, please, the way you've been calling me since a long time, since you know me. So I'd like to have you address me as Rani only. Title is And Rani. can I answer Mr. Makrana's question? This film is extremely close to us. ये film बहुत ही अहम है हमारे लिए और it's a way of speaking about all the women, all the girls जिनके जो मर्दानी का जो spirit है उसको जगाने के लिए हर औरत, हर लड़की के मन में ये जो spirit है मर्दानी का ये जगाने के लिए हमने ये film बनाई है. तो ये अगर आप मैसेज के तौर में अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन से मेरे डैड मुझे हमेशा ये सुनाते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. मेरे डैड खुद झांसी के हैं और मेरा नाम रानी है, तो मुझे हमेशा बचपन से बहुत प्यार से ये कहते थे. और मुझे याद है कि मैं
झांसी के फोर्ट में बहुत बार जा चुकी हूँ डैडी के साथ अर्ली मॉर्निंग वॉक के तौर पे, और उस समय बहुत सारी स्टोरीज रानी ऑफ झांसी की मैं सुनती थी और बहुत अच्छा लगता था. एट अ वेरी यंग एज आई थिंक आई गॉट टू नो ऑफ द लेजेंड ऑफ रानी ऑफ झांसी एंड हाउ स्ट्रॉन्ग शी वॉज. एंड स्ट्रॉन्ग डजंट मीन इन टर्म्स ऑफ physicality. Strong means how you are strong in spirit, and I guess that is what we all women are. We are all descendants of Shakti. So हमारे अंदर एक शक्ति ऑलरेडी है, और वही शक्ति का एक तरीके से प्रदर्शन है इस फिल्म में कि अपने अंदर की मर्दानी जगाओ ताकि कोई इसका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले. तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ मैसेज. ओके, Can I have the next question, please? रानी, आप फाइनली रानी चोपड़ा हो गई हैं यहाँ आप पर. कहाँ हैं? हाँ. यहाँ पर रानी Yeah. चोपड़ा हो गई है. वो खुशी आपके चेहरे पे साफ झलक रही है. जी. क्या बोलना चाहेंगे वो फीलिंग के बारे में? फीलिंग, अरे फीलिंग के बारे में पहले मैं शिल्पा जी से और प्रियंका जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो फीलिंग है वो आपको मैं 1 सेकंड में बता रही हूँ. प्रियंका, रोनाली, रश्मि, थैंक यू. एंड इट्स कम, प्लीज. ये जो खुशी है मेरी आपके साथ मैं जरा बांट लूं. थैंक यू. रानी, लेकिन हम एक बात से ये भी नाराज हैं कि आप इतने दूर जाके आपने शादी रचाई. आप प्लीज मिठाई खाइए ना, फिर अच्छी अच्छी प्यार भरी क्वेश्चंस आप पूछने को स्टार्ट करेंगे. थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए. चलिए रानी, जरा जल्दी लड्डू खिलाइए सबको. आप 2 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अरे आप लोग क्यों छूट गए? लिया ना. तुम लोग पहले खाओ यार. धक्का. अच्छा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. जरा रानी, स्वीट्स बहुत अच्छा है. अरे सुनाई नहीं दे रहा है. यार गिर गए यार. हाँ, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन. सो फीलिंग्स के बारे में. दिस इज द फीलिंग दैट आई फील लाइक फीडिंग लड्डूज टू एवरीबडी एवरी डे. अच्छा, लेकिन नाराजगी क्या थी हमसे कि आप इटली चली गई, वहां पे आपने शादी की और उसके बाद फिर उसके बाद क्या है, मैं आपके क्वेश्चन से सहमत हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था. मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे लेके चले गए. अब मैं कुछ बोल नहीं पाई उनको. जैसे कि द थिंग इज दैट अभी शादी तो मतलब बचानी भी है ना. नई शादी हुई है और तभी तो शादी हुई भी नहीं थी. तो जैसे उन्होंने बोला कि चलो इटली, मैंने बोला चलो. तो आई हैड नो चॉइस. अच्छा, अभी हमने लड्डू खाए हैं. क्या पता वो दिन बहुत ही जल्द आएगा कि जब दूसरी लड्डू हमारे मुंह में पड़ेगी. जरूर जरूर जरूर. उसमें तो डबल लड्डू खिलाऊंगी मैं, उसमें सौंदेश के साथ. रानी, हीना कुमावत फ्रॉम P7 News. Yes. Congratulations. How are you? I am Hina, fine. you're fine. या आपकी शादी के लिए मुबारकबाद. Thank you. आपका टाइटल्स में नाम क्या आएगा, रानी मुखर्जी या रानी आदित्य चोपड़ा? रानी मुखर्जी. आप चेंज नहीं कर रही हैं अपना नाम? जी, मुझे मेरे प्यार से बहुत प्यार है, मेरे नाम से बहुत प्यार है. तो आई थिंक आई विल कीप टू दैट बिकॉज आई थिंक इट्स फॉर माई फिल्म्स. आई थिंक पीपल नो मी एज रानी मुखर्जी एंड दे विल ऑलवेज नो मी एज रानी मुखर्जी. पर्सनल लाइफ में ऑब्वियसली व्हेन आई डू admit my children in the school, I guess that will be a change in my surname. But for my fans, it will always remain Rani Mukherjee. रानी, अभी आपने कहा कि आप झांसी की रानी से आप भी क्वेश्चंस पूछ रहे, दूसरों को भी मौका दीजिए. ये मेरा सवाल कि झांसी की रानी से बहुत ज्यादा इंस्पायर है, तो क्या आदित्य को ये रूप दिखाया कभी एकदम रौद्र रूप? बहुत बार. हेलो रानी. हाँ, ये मर्दानापन शादी के बाद जगह या पहले से था? जैसे मैं पैदा हुई ना तब से. जब से पैदा हुई थी ना तभी माँ शक्ति के कोख से पैदा हुई शक्ति बन के निकली. देर नहीं लगी. अभी मर्दानी नाम अभी आया है फिल्म में, लेकिन अगर आप देखेंगे मेरी पहली फिल्म से राजे की आएगी बारात, तब से ही मैं काफी मतलब मर्दानी का ही रोल कर रही हूँ, प्ले कर रही हूँ. तो वैसे कुछ नई बात नहीं है.
मेरे हर किरदार में मैंने जो भी फिल्म्स की है, हर फिल्म में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, और मैं हमेशा से यही ऐसे ही रोल्स के तरफ ज़्यादा आकर्षित हुई हूँ। और ये जो रोल है, आई एम वेरी हैप्पी दैट ये रोल ऐसा मेरे जैसे बोलते ना गोद में आके मतलब गिरा। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले शिवानी शिवाजी रॉय बिकॉज शी इज़ इंस्पेक्टर इन क्राइम ब्रांच। और बहुत मज़ा आया इन लोगों से मिलकर जब मैंने रिसर्च की इस फिल्म के ऊपर, और बहुत सारे इंस्पेक्टर से मिली जो कि सब लेडी इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे बहुत इंस्पिरेशन भी ली। एंड ये फिल्म एक तरीका है कि हम पूरे देश को बताएं कि जो हमारे कंट्री में जो फीमेल ऑफिसर्स है, जो लेडी ऑफिसर्स है, उनका कितना योगदान है हमारे लाइफ में, जो हम ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक जो कैवलियर वे ऑफ लुकिंग एट विमेन जो हमारे दिमाग में बैठ चुका है, जो हर मर्द, हर मतलब विमेन एंड मेन लुक अपॉन एज फीमेल ऑफिसर्स, की शायद ये इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, शायद ये इतने मतलब मेल ऑफिसर्स की तरह नहीं होंगे। बट टू टेल यू द ट्रूथ, देर आर फीमेल ऑफिसर्स हु आर, आई वुड से, नॉट ओनली एज गुड एज द मेल ऑफिसर्स बट समटाइम्स इवन बेटर। And this has been something that Himanshu Roy himself has once told me about one of his lady officers, that they are so good. So I think it's just the way we have to change the perspective of how people look at lady cops and lady police officers. And this film is probably one step towards that change. Hi, Rani here. This is Rani. Rani from Glamsham. Just a week before your film, Singham Returns is also releasing, which is on a similar genre. Do you think that it will draw comparisons between both the films? See, I think in a year there are a lot of films that release, and I think every film is compared to the other film in terms of the box office returns, in terms of the critical acclaim. So obviously if there's a film that's coming 1 week before us, there will be comparisons. But the most and foremost important comparison would be that Ajay Devgan plays a male cop and I play a female cop. So that's the most important and the only difference there. And also I'm playing an officer from the crime branch. So you won't see me in the uniform as such the way you see Ajay Devgan, because I think he plays a police officer in his film. So yes, there is a difference in that. But obviously, as I told you, that our film will obviously deal with a different storylines. So hopefully there won't be comparisons, because I don't think every film that is made is not for not for comparing with one another. I think it's for just entertaining the audience with a different story. And hopefully with Mardani, we'll be able to entertain you all with a different storyline. Thank you. Hi, Rani. Hi, Rani. I Rani, have a Rajiv few Vijay questions. Hi. Hi, how are you? I'm good. Congrats for your marriage first. Thank you. And you talked about Raja Ki Aayegi Barat, which Ji. was your first film, and Right. that was your opposing Shadab Khan. domestic crimes, so to Right. speak. Right. Now you're tackling things at a national level. Right. So, do you think this is kind of a second coming for you, or how much do you intend to work now? I hope so. This is a second coming for me. And I hope to work till I literally take my boots off. So you can't take an artist out of me ever. Even though I'll have to play different roles now, that of a wife, in the future of a mother. But my most and foremost significant role as an actor that I am known for, I think that role of mine I'll continue playing till ever. So that's never going to change. Hello, Hi, Rani. Rani. Hi. Yeah. How are you doing? I'm doing okay. Okay, I have few questions for you. Few. Okay. Few. First being that Mr. Aditya Chopra is a very elusive man, Right. reclusive. He hardly makes appearances. Reclusive or elusive? Both. Both, okay. And you hardly, I think he's the least captured celebrity, not because we haven't tried, because I think he doesn't like to be captured Right. on camera. Right. But do we ever get to see the newlyweds together without having to stalk him or going about him? Does that going to happen now? Do we see you guys together sometimes? Will that happen after the marriage? See, we are always together. So I mean, no. I Yeah. mean, like an official appearance. You know how celebs go to events together and then they pose without having any No, qualms. we do go out together, but I think as a person, I think he's made a very conscious decision to be concentrating more on his work rather than being seen a lot. And I think that's a decision that he's taken on a personal level.
And I don't think after marriage that would change, because I don't think marriage makes you a different person. It's just another extension of oneself. Sure. And though he's married to an actor, I don't think he's entitled to become a media savvy person or a celebrity who's been looked at as anyone different, because he's his own individual, and I'm sure he'll like to maintain his privacy the way he always has maintained. Sure, absolutely. Also, so he still remains invisible for us, unfortunately. No, as long as he's visible to me, I'm very happy. I'm sure. Rani, you're a very close friend of yours. Preeti is going through a hard time. I'm sure you're aware Is of she it. going through a hard time? She's going through a very difficult time. I Okay. don't know. Have you heard of what is happening to her? No, of course I've heard. But I don't know whether she's going through a hard time, because it's difficult for Preeti to go through a hard time. Yeah, it is. Please tell us. I mean, she's a strong woman, so we want to know how your take on the entire matter. And like you say, you know her well, and it's difficult for her to go through a hard time. See, the only thing I would like to say is that obviously right now her case is under investigation. So I don't think this is the right platform for us to talk about Preeti's case, because I think it's a very personal thing that she's taken up with a person who she has been knowing for a long time. So on Mardani platform, I don't think it's the right time to speak about it. I think when I do get a chance outside this place that I am today, sitting here for Mardani, I think I'll be able to talk further on that. And normally I never like to comment on somebody else's life, nor do I like to comment on some other cases, because I don't think that is right. Because as soon as anything comes under the law and order situation or under the judiciary, I don't think any person has a right to probably speak up or give an opinion on that. No, absolutely. And also, we asked this question also because you're a close friend of hers, and she's like we're discussing strong women. So She's a great person, and she's been a colleague of mine for many years. And we've both been fortunate to have worked together in 4 films together. We also danced to Pia Pia. Like, in fact, Preeti used to always tell me that she and me would get married on the same mandap, so our weddings would be super successful, like our films. But I beat her to that. So I'm now waiting for Preeti to get married. So that'll be a wonderful news to hear from her and from her end. again, the third question being, have you got inspired? Sometimes you get inspired for characters that you play, and this is again. I've been really inspired, firstly from my mother. She's quite a tigress, and from her I've learned how to be completely in hold of my actions, because she's a very, very strong personality in my house, and so are my Masis and everybody. Since we are from Calcutta, women are known for being very, very strong. So yes, also I've earned the reputation of being a Mardani off screen as well. In company of my friends and my close friends, they do get scared to come near me and say anything which is not really rightfully so, because I think I'll show my Mardani side at that point. But having said so, I think my inspiration has been all the strong ladies in my family, including my Nani. And of course, for this film, it's been the numerous lady police officers who have shown a lot of grit in their career. And a lot of them actually, to take a few names, Miran Borvankar and all of these people, who have worked so hard and have been in the police line, and they have slogged in spite of having families, in spite of having children, and giving their first priority to the work of policing. So I think all of them have been great inspirations for me to do this role and to take this role up. And hopefully, if this film works and if people get inspired, obviously, with the film, then I think it's going to give an opportunity for a lot of girls to have Shivani Roy as a role model. And to, of course, bring out the Mardani in her. So that's very, very important. Thank you so much. Hi, Rani. Thanks. Hi, Rani. Yeah, this is Rajni from National Dunia. Hi, Rajni. सबसे पहले तो आपको आपकी शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं Thank you. और जो आपने लड्डू बंटवाए उसके लिए थैंक यू सो मच. Thank you. आपसे ये पूछना चाहेंगे कि नो वन किल्ड जेसिका में आपने एक पावरफुल लेडी जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई जी. थी, वो बताया था आपने, और इस फिल्म में आप एक लेडी पावरफुल लेडी पुलिस ऑफिसर बनी है. नेक्स्ट फिल्म में या फिर आने वाले फिल्मों में कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप औरतों की जो एक शक्ति है वो दिखाना चाहें? That's a good question, actually.
लेकिन जैसे मैंने हमेशा बोला है कि वी एक्टर्स आर लाइक बेगर्स, वी नेवर चूज, वी ऑलवेज चोजन बाय द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर एंड द क्रिएटिव पीपल. सो hopefully that if there's a script which is like a powerful script that comes my way, which is again very women centric, I will definitely take it up. But as I said, that we don't choose, we just sit there and we wait to be chosen for a particular role. Like how I was chosen for this film, hopefully there'll be better roles, there'll be better characters again which will be written, and I would love to portray another strong female character. लेकिन अब जब आप रानी चोपड़ा बन गई है तो सबका मानना है कि अब आपके हाथ में वो पावर आ गया है कि मतलब आप खुद ही चूज जी करें. देखिए, जब कोई बीवी बनती है ना तो आई थिंक ऑल द विमेन विल अग्री विथ मी, देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन द हाउस होल्ड, दैट आई मस्ट टेल यू. द हाउस में बहुत पावर आ गया है, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकती. हाउस में अगर आप बोले कि यस देयर इज अ किचन में जो पावर है वो है मेरे पास, तो वो प्रोडक्शन हाथ हाउस में में है. कम आएगा. नहीं, प्रोडक्शन हाउस में आई थिंक देयर आर वेरी वेरी capable and able people in the production house to take care of everything, and most importantly Adi being at the top, at the helm of everything, I don't think he requires anybody else. I'd like to rather take over the house and not the office. रानी आपके रानी आलोक है फ्रॉम OFM. मेरा यू आलोक पीछे हूँ मैं. हाँ, हेलो. मेरा सवाल है कि इसमें एक लाइन है, एवरी वॉर इज पर्सनल. तो इस लाइन से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप रियल लाइफ में एंड रियल लाइफ में? एवरी वॉर इज पर्सनल. आप अभी आके मुझे छेड़ने लगेंगे, मैं आपको एक दूंगी ना कस के. मैं पर्सनल, एवरी वॉर इज पर्सनल. जो भी वॉर होती है सब पर्सनली होती है, एंड इट्स बेसिकली एंड इट्स अ लाइन विच इज इंस्पायर्ड ऑब्वियसली फ्रॉम द स्टोरी लाइन ऑफ द फिल्म. जो हमारे जो फिल्म की जो कहानी है उससे ही इंस्पायर होकर ये टैग लाइन निकाला गया है. तो जब आप फिल्म देखेंगे या आप ज़्यादा प्रोमोज देखेंगे जो भी जो आना शुरू होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये टैगलाइन क्यों है. कभी ऐसा रियलिटी में भी हुआ? आपकी आवाज बहुत अच्छी. आर यू फ्रॉम द रेडियो? हाँ, मैं रेडियो में. हाँ सही है ना. हाँ, वेरी नाइस वॉइस. तो कभी ऐसा असल जिंदगी में भी हुआ है कि कोई वॉर बहुत पर्सनल हो गई हो? और नहीं, ऐसी तो कोई जंग नहीं है अभी फिलहाल. जब होगी तब वील कम टू दैट. एंड हर एक चीज का स्त्रीलिंग होता था, जैसे मर्द का तो मर्दानी कहा जाएगा अब. हाँ, हर एक वर्ड का स्त्रीलिंग होता है, लाइक पुरुष तो महिला. जी. नाउ मर्द को मर्दानी, लाइक महिलाओं को मर्दानी कहा जाएगा अगर कोई जिसके अंदर मर्द वाली खूबी हो. जिसके अंदर मर्दानी स्पिरिट हो उसको मर्दानी कहा जाएगा. और वो स्पिरिट क्या होती है, बस आप अगर एक बार में बता दें कि मर्दानी. वो तो मैंने पहले ही आपको पूरा एक सुना दिया था किस्सा चिट्ठा. आप शायद तभी लड्डू खाने में बिजी हो गए. हाँ, मैंने 2 लड्डू खाए. आपने सुना? हाँ, इसीलिए देखा ना. रानी, देखा, पकड़े गए आप. हाय रानी. हाय ज्योति फ्रॉम नाइट. रानी, आजकल बॉलीवुड. अरे, आई एम गोना आंसर द गर्ल. जस्ट बिकॉज यू हैव अ लाउडर वॉइस डजंट मीन आई विल आंसर यू फर्स्ट. रानी हाय, ज्योति फ्रॉम 9XM. मेरा सवाल आपसे है कि फिल्म में आपने काफी चमाटा जड़े हैं बहुत सारे लोगों को, तो क्या रियल लाइफ में या कॉलेज में? रियल लाइफ में मैं बचपन से देते आई हूँ लोगों को. फैक्ट है. इन स्कूल ऑल्सो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को टिकाए थे. तो अब तक जब वो रीयूनियन होती है वो मेरे से एक हाथ डिस्टेंस में मिलते हैं, क्योंकि दे आर रियली स्कैर्ड. क्यों? कोई यही ना, एक वन फट कोई खास इंसिडेंट्स जो बताना चाहे? नहीं, खास इंसिडेंट अभी क्या बताया, अभी वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको बैठ के सुनाती हूँ मैं कहानियाँ. और मैं आपको भी बोलती हूँ कि कोई ऐसे आपके साथ छेड़खानी करे तो आप भी लगा देना 2. रानी हाय, दिस इज ईशान फ्रॉम न्यूज एक्सप्रेस. यस ईशान. रानी, एक चीज जानना चाहते हैं, आजकल बॉलीवुड में जो हीरोइनों का जो पहले एक दौर हुआ करता था कि हीरो होता था, हीरोइन होती थी, प्यार होता था, लड़ाई होती थी. हीरो होता था, हीरोइन होती थी, प्यार होता था, लड़ाई होती थी. लड़ाई उनके बीच होती थी या उनके परिवारों के बीच लड़ाई होती थी? किसके बीच में? हीरोइन के लिए लड़ाई होती थी. अच्छा, हीरोइन के लिए. हाँ, लेकिन अब वो दौर कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है. विद्या बालन और आप सब लोग एक डगर पे निकल रहे हैं, फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा है? देखिए, एक्चुअली पब्लिक सब डिसाइड करती है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जिस तरह की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चलती है. That inspires a lot of producers to make films like that. और मैं तो चाहती हूँ कि और ऐसी फिल्में आए
जो बॉक्स ऑफिस में चले ताकि और फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स बने एंड मोर प्रोड्यूसर्स आर इंस्पायर्ड टू मेक मोर फिल्म्स लाइक दैट। हाल ही में विद्या ने भी कहा कि खान्स के संग काम करने में इतना कुछ रहता नहीं है फिल्म में, मतलब जो भी होता है लाइमलाइट खान्स ले जाते हैं। तो आप इस बात को मानती हैं और आप क्या इसी ढर्रे पे आप भी विश्वास करती हैं? जी, मैं तो सब खानों से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बहुत पर्सनल एक प्यार है उनके साथ। और जब से मैंने अपनी पहली फिल्म की है गुलाम कुछ कुछ होता है, उनके साथ मेरा एक ख़ास एक रिश्ता है। और लकीली जब भी मैंने खानों के साथ काम किया है मेरा रोल बहुत अच्छा रहा है, तो आई शुड नॉट बी कंप्लेनिंग एंड दे आर द लव्स ऑफ माई लाइफ। आई जस्ट लव देम ऑल एंड दे आर अमेजिंग एंड आई एब्सोल्युटली लव देम, दे आर गॉर्जियस। और क्योंकि आप क्राइम ब्रांच ऑफिसर का एक किरदार निभा रही हैं, तो इस बार 26 तारीख को मुंबई एंटी नार्कोटिक्स टीम भी एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई में एक अभियान चालू किया है कि एंटी नार्कोटिक्स को लेकर के किसी को इस सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक मैसेज क्या रहेगा उन लोगों के लिए? यही रहेगा कि वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ गौ माता, दूध पियो, घी खाओ, बटर खाओ, फ्रेश चीजें खाओ, लड्डू खाओ और खुश रहो। पूरी जिंदगी आप हेल्दी रहेंगे। प्योर घी, प्योर देसी घी। हेलो, हाँ, रानी में दाग। हाँ जी, लागा चुनरी किसकी? में आपकी? You collaborated with Pradeep Sarkar. हाँ, अच्छा, okay. हाँ जी. So that movie did not get the kind of response that I'm sure that you and Pradeep both wanted. Right. Now you're collaborating with him again on a female-oriented topic with Mardani. Now, what were the mistakes that you think happened then, and have you done to rectify those in this particular film? I just wish I knew, otherwise I would have been an astrologer and I would be sitting and giving advices to a lot of people, what should they do in films and what they shouldn't do in films. But to take it on a positive note, I think I'm really, really happy and very, very excited to have collaborated with Dada again on the film. I feel he's an extremely talented director and I love his work and I love working with him. We have a great working relationship, and hopefully with this film, both Pradeep Da and me can wash off the dark that we earlier created with Laga Chunri. Yeah? Hello. You're happy with the answer? Yeah? Okay. Rani here. How much will you have in terms of a creative say in the Yashraj films to come, whether they star you or whether they don't star you? I think as a creative person, as a person who's attached with the industry, not only Yashraj, I think there are a lot of my friends who are not working for Yashraj at present. But as a creative person, if there's anybody who ever makes me hear a script and would like an opinion, I'm always there to give. So I don't think there's a particular role that I would be playing or anything of that sort, but I'm always there to listen to scripts. And I think that's a normal thing that friends in the industry keep doing. Like there are many scripts that I send to some of my friends to have a read and give an opinion. The same way I've also read many scripts like that, but nothing really concrete. I would just say it in a very informal way. Let's take the last two questions, please. आपकी जो ये फिल्म है, ये आज की आप जो कौन है? हाँ जी, हेलो हेलो, आज के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रख के बनाई गई है ये फिल्म। लाइक रेप केसेस हो रहे हैं, और तो आपने बताया कि 2 लाफे लगा देने, 2 चमाट लगा देने चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता है? नहीं लगता है, लेकिन तो फिर मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ आप देते नहीं हो? हाँ? नहीं, आप पुलिस रफीक होल्ड let me give you one back. मेरा सवाल ये है कि पुलिस इंस्पेक्टर 2 जमाट लगा सकते हैं, क्यों? लेकिन नॉर्मल लड़की के लिए कितना पॉसिबल है? क्यों नॉर्मल लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है? यही तो मतलब जरूरी है दैट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर विमेन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। एंड नहीं, प्रोटेक्शन जो है, जैसे कि आजकल सब लोग ऐसा कहते हैं कि देर आर स्कूल्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, देर आर सो मेनी स्कूल्स दैट आर कमिंग अप ऑफ मार्शल आर्ट्स, जो कि मैं हमेशा, जैसे आई हैड गॉन टू अ प्लेस वेयर दे हैड दादा आपकी बातचीत हो गई तो मैं उनके साथ बात कर लूँ प्लीज। there is this place I'd gone to speak to all the women. They had called me from the police to have a word with all of the young girls and everything who had come for the forum. तो मुझे वहाँ पर भी पूछा गया था, और मैंने तभी भी कहा था कि हमारे स्कूल्स में एक कंपल्सरी करिकुलम निकलना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए स्कूल में। क्योंकि जैसे कि आजकल इतने स्कूल में हम देखते हैं कि पीपल आर द चिल्ड्रन आर प्लेइंग स्पोर्ट्स,
पेंटिंग क्लासेस लेते, स्केटिंग क्लासेस लेते, वैसे ही आई थिंक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए कंपलसरी, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होनी चाहिए कंपलसरी थ्रू आउट. मतलब जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वेदर इट्स गवर्नमेंट रन और private run, I think it's very important to come out with classes like this which are made compulsory. And आज के हालात देख के, मतलब मद्देनजर रख के, there should be these classes that should be formed, जहाँ पे लड़कियों को सिखाया जाना चाहिए how to self defend. And I think self defense is the need of the hour, I think. And I think every one of us should know some form of the other. अभी वो दिन चले गए जब हम कहते थे कि अभी we have somebody to protect us, कि किसी का हाथ पकड़ के चलो, भैया का हाथ पकड़ के चलो, या हस्बैंड का हाथ पकड़ के चलो, या डैडी का हाथ पकड़ के चलो. आई थिंक नाउ इट्स द टाइम इज दैट वी शुड टेक इट अप, वी विमेन शुड टेक इट अप एंड ट्राई एंड डू समथिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फर्स्ट. ये फिल्म के जरिए आप यही मैसेज देना चाहती हैं? जी एकदम, कि सब सेल्फ डिफेंस में लग जाए. और सब इतना तो कर ही ले कि एक सिचुएशन अगर आए तो वो अपने आप को मतलब बचा सके. Okay, we'll take the last question, please. Thank you. रानी यहाँ पर. Hi Rani. Again, 1 minute. Let me answer him. Then I'll answer you. Myself Himesh from talkingmovies.com. Yeah. In the trailer, we have seen you doing some thrilling action sequence. So, how was your experience going through the entire process of action? Can I not have that light coming on my face? Thank you. Because I can't see your friend then. That's why. Huh. So, how was your experience going through the entire process of action? Actually, my experience was great because I did learn Krav Maga, which is an Israeli martial arts self-defense form, which I had to go extensive training with for my sequence. And through the process of learning Krav Maga, the instructors who are from Delhi, they in fact took me through an entire series of teaching me what are the different self-defense techniques that women can do in terms of the danger that they face on a day-to-day level. And Krav Maga emphasis on the fact that you don't have to be physically strong to protect yourself. Like log bolte na ki aap gym karo, ya become strong, or lift up weights and become strong and then fight. But Krav Maga actually believes that however strong you are, whether your power is 10 or 100 or 50, as long as you know the technique correctly, you can actually come out of any difficult situation. And I thought that was really interesting in Krav Maga because that's the only form of martial arts that does not emphasize on your physical power. So I think for females or, women, I think the form of Krav Maga would be actually very, very good for them. Because, you don't have to really use your power to get your target down. Because the question always arises that, when a man is much stronger and he comes in front of you, how do you defend yourself from a person who's probably 6 foot height or he's probably stronger than you physically? How do you defend yourself? And Krav Maga has the answers, and they teach you different techniques. And I was really, really actually intrigued with those things, and I actually learned some of the forms of self-defense. And hopefully I'll use them if I ever need to. So I think it's a great opportunity through this film that I learned another thing, because normally in every film I do go through extensive training of some other thing that I learn. And through Mardani I've learned this. So I really in fact enjoyed my action scenes. Thank you. Thank you. रानी, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर हैं. आपने गाना भी गाया हुआ है और आप प्रोड्यूसर भी. सिंगिंग कभी गाना गाया? आतिका खंडाला में थोड़ा सा एक लाइनिंग दे दी होगी आपने. नहीं आपने ट्राई किया हुआ है एक्चुअली. अरे अच्छा, उसमें आमिर ने. सुनील. अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या हो रहा है सुनील? आप एक प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं, तो क्या आगे जाके हम डायरेक्शन में देख सकते हैं रानी को? नो, नॉट एट ऑल. मैं बहुत खुश हूँ एक्टिंग करते हुए. मुझे कैमरा के सामने रहना बहुत अच्छा लगता है. एंड आई थिंक आई विल रादर do what I'm doing in front of the camera, and for behind the camera there are a lot of capable people doing that already. Right. So I really like me being in front of the camera, like the way I'm right now. Thank you very much. We have to end this right now. Thank you. Allow me what? Supporting cast. Okay, can I take this question, Rafiq? Sure. Please. The supporting cast actually is very, very interesting. They are mostly all making their debuts, and they're very, very interesting actors. In fact, when you see the film, I think the supporting cast will come out very, very strongly. And personally speaking, I really had a wonderful time working with them because they are very new and they are very fresh, and they actually come with a very different perspective in terms of performance. So I, in fact, really enjoyed performing with them.
Bhavna auntie, you didn't ask me even one question. Ask now one question, Bhavna auntie. You're looking so pretty. One question. Which was shown in the beginning of the film. Right. When the film starts, the facts and figures which are shown Film about... starts, the trailer starts. Yeah, the Bhavna trailer. auntie. So all the human trafficking that's Right. taking place, Right. it seems like a very strong and very hardcore film. It looks to me at the moment perhaps the most strong film that Yash Raj Films has done of this genre. Absolutely. It must have been a very traumatic experience also, because you are up close with the kind of experiences these girls have gone through. Absolutely. It And was so many stories you must have heard. How did they Absolutely. affect you? Like, in fact, during the research work of the film, when these stories that we came up with, which were true facts and true stories about a lot of these trafficking things and about the policing, in fact, because we had to delve into the trafficking, we also had to delve into the life of the police, and we actually got to know so many facts which were very, very disturbing, and through this film, I think we've taken a step to basically try and speak those things out, and tell people about what things are happening, caution the parents to, in fact, the parents who have daughters, and the girls, to basically tell them that the way trafficking happens today in cities in broad daylight is very scary. And it's just a way from our side to basically tell the society that obviously as entertainers, we can only do it through the medium of films, because we don't really have any other power otherwise. So I think through the entertainment medium, through a film, we've tried to speak these points out. Also, you'll be shocked to know that a lot of police stations actually don't even have women loose. You know, and I think that's a really, really sorry state to have so many female police officers in the country and not have female toilets, you know, and it begins there. And it's just the fact, the way we look at female officers, you know, that, oh, she's a female officer, so what could she do? You know, she can't be as strong as a man. And I think that's the kind of perspective that we are hoping to change with this film. We are trying to portray a very strong female cop. And the strong female cop is nothing to do with anything fictional. It's very, very real. There are cops like Shivani Shivaji Rao. There are cops who are absolutely strong, that if they slap you, you can actually go into a tizzy. And I actually, during my research work, I had an officer slap one of the boys just for a kind of a training session that I was going through. And it was quite a resounding slap, just to actually show the strength that these female officers have. And it's brilliant. It's very, very inspiring. I was very inspired. But yes, through Shivani Roy, we are showing one aspect of how strong they are and what they can do and what lengths they can go. Because I've actually had talks with so many of the senior cops, you know, where they have told me that, Rani, you will be surprised that there are so many female cops who, I want to tell you, are not only as good as the men, but sometimes they're even better. And that gives us great encouragement to actually come out with a film of a female cop. And I hope that through the film we have, I hope we are successful in successfully portraying a female cop in the right spirit. And I think not yet. It's obviously going to go soon. But I think the title Mardani is very apt for a film like this. And through the film, we're also trying to inspire girls to actually bring out the spirit of Mardani from inside them. And I think when every girl turns out to be a Mardani, I think मर्दों का ज़्यादा जोर नहीं चलने वाला है तभी. I think it's on every girl to basically take up her case personally. If she is violated, I think she is the first one to stand up and speak for herself rather than wait for somebody else to speak up for her. So I think that's the basic message to the film. Hope you enjoyed the film, Bhavna aunty, and love you. Okay, thank you very much. Sunil.